Good morning, children. Hello, I'm Santosh Kumar Sharma, your maths and physics teacher, and in today's class, I will explain about the Ohm's law. Ohm's law, right? Given by the Ohm, he tried to establish a relation between the potential difference and the current flowing through the circuit. To study the relationship between the potential difference across the end of the conductor and the current flowing through it, he has a simple experimental setup, right? He set up a simple circuit comprises of a resistance across which he added a voltmeter and then an ammeter, a key, and a cell. So he has a very simple experimental setup to study about the relationship between the potential difference and the current flowing through the circuit, right? As he connected one cell to the circuit and plug in, he found the potential difference shown by the voltmeter, as well as he noted down the current shown by the ammeter. Similarly, he add another cell, it means a combination of two cells to the circuit, and again noted down the values shown by the voltmeter and ammeter. Similarly, right, he added 3, 4, 5, 6 cells in the circuit and noted down the values shown by the voltmeter and the ammeter. He collects the data just like that. He collected the data of potential difference and current flowing through the circuit. Current is in ampere and potential difference, as we all know, in volt. So when he connected one cell, say the potential difference was 1.5 volt and the current is 1 ampere. Again, when he added two cells to the circuit, the potential difference was 3 volt and the current, say, 2 ampere. When he added the third cell, it means 3 cell to the circuit, the potential difference shown was 4.5 volt and the current, say, 3 ampere. When he added the 4 cells to the circuit, potential difference rose to 6 volt and the current 4 ampere. In this way, he collected the data by increasing the number of cells to the circuit and noting down the value of potential, the value shown in the voltmeter as well as in the ammeter, and then he plotted the graph between V and I. As he plot this graph on the graph paper, he obtained a straight line. This graph is V versus I. It means potential difference versus I. This straight line suggests that potential difference and current flowing through the circuit are directly proportional to each other, right? So when you took any value on this particular graph, let us mark 1, 2, 3, 4, 5 and so on, 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9. When it took any value on this particular graph, he found that the ratio V by I is always a constant. So after taking the data, right, he plot the graph
on the graph paper and find that the ratio V by I is a constant. And then he concluded that the potential difference is directly proportional to the current and give us the Ohm's law. Remember one thing, that the experiment was carried out at a constant temperature. Temperature was maintained at a constant level. Ohm's carried his experiment at constant temperature. And found that the ratio V upon I is a constant. Anyway, if you take any point, right, and the corresponding value of I, that is current, any point on this graph line, the corresponding value of I and the corresponding value of V, and finding out the ratio V by I, you will find that it is always a constant. By concluding his activity, he states his law, that is called Ohm's law. And this law states that Ohm's law states that the current flowing through the circuit is directly proportional to the potential difference across its ends, keeping the temperature unchanged. That is, I is proportional to V, directly proportional to the potential difference. Let us recap the Ohm's activity as well as this what Ohm's law state. Ohm's carried out an experiment to establish a relation between potential difference and the current flowing through the circuit. To carry out his experiment, Ohm set up a simple experimental setup which comprises of a resistance, right, a voltmeter, ammeter and cell, as well as a plug key. When he took one cell, connected that particular one cell to the circuit and plug in, he noted down the reading shown by the voltmeter as well as the reading shown by the ammeter. Again, he added two cells to the circuit. Another one. And again plugging. He further noted down the reading shown by the voltmeter as well as the ammeter. He keep on increasing the number of cells in the circuit and noted down the reading shown by the voltmeter as well as ammeter each time, and then plotted the given data or the data collected on a graph paper. The graph is between V and I,
and he found that the plotted graph line is a straight line. On this particular straight line, at any point, the ratio V by I is always a constant. He observed that. By observing the ratio V by I is always a constant, he concluded a law. That law is known as Ohm's law, which states that the current flowing through the circuit is directly proportional to the potential difference across the ends, keeping the temperature unchanged or constant. So I is proportional to V, isn't it? We will formulate this relation into a formula. We have just seen that the current flowing through the circuit is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor, or you can say circuit, according to the Ohm's law. So by Ohm's law, I is proportional to V. In other words, V is proportional to I implies V is equal to IR, where R is a constant known as resistance of the conductor. Remember one thing in mind, that Ohms carried his experiment at constant temperature. Ohm carried out his experiment at a constant temperature. So using this formula, we can write that I is equal to V upon R, isn't it? The relation between the current and the resistance is inversely proportional. I and R are inversely proportional to each other. It means if current is increasing, resistance will decrease. And if the resistance is increasing, the current will decrease. That's why, according to Ohm's law, that it states that I is proportional to V, but we do not take it. We take it V is proportional to I. Why? Because I is inversely proportional to R. If we have taken I is proportional to V, we could not write I is equal to VR. Why? Because I is inversely proportional to the resistance. Right? So it is all about the Ohm's law. Now, using the same relation, we get that R is equal to V upon I, which is a constant. So the SI unit of resistance since R is equal to V upon I, and we know that the SI unit of potential difference is volt, and for current is ampere, so it is volt per ampere, which is given a specific name ohm, represented by this symbol. So the SI unit of resistance is volt per ampere, which is known as ohm, represented by this particular symbol. एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं. ओम ने एक एक्सपेरिमेंट किया. किस लिए किया?
एक्सपेरिमेंट किया टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। उसके लिए उसने एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया, एक रेजिस्टेंस लिया, वोल्टमीटर जोड़ा, एमीटर जोड़ा, एक प्लग की लिया, एक सेल लिया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप प्रिपेयर किया। जैसे ही करंट पास कराया, राइट, एक रीडिंग शो करेगा वोल्टमीटर और एमीटर, दोनों का रीडिंग नोट किया। फिर उसने एक सेल की जगह 2 सेल कर दिया। फिर उसने करंट पास कराया। करंट जब पास कराया, फर्दर वोल्टमीटर ने रीडिंग शो किया, एमीटर ने रीडिंग शो किया, उसने फिर रीडिंग को नोट किया, राइट। इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता चला गया, राइट, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, राइट। इस बात को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ध्यान में रखिएगा कि ओम्स एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैरी किया गया, इजंट इट। इसके बाद जो डेटा उसने कलेक्ट किया वी और आई का, उसको उसने ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया। जब ग्राफ पेपर पे डेटा प्लॉट किया तो उसको क्या प्राप्त हुआ, एक स्ट्रेट लाइन। यह स्ट्रेट लाइन सजेस्ट करता है वी एंड आई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इस पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे यदि हम आई का वी का वैल्यू लें और रेशियो निकाले वी बाई आई का, वी ऑलवेज गेट अ कांस्टेंट। दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। एट अ पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स द सेम, इट डज नॉट चेंज। तो हमारे पास स्टेटमेंट इसके बाद आया ओम्स का। ओम्स लॉ स्टेट करता है दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और यू कैन से कंडक्टर is directly proportional to the potential difference, right? So I is proportional to V. In other words, V is proportional to I। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं वो नीचे एक्सप्लेन किया मैंने। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि यदि हम I is equal to V लेते हैं और I is equal to हम VR लिखते हैं तो ये रिलेशन गलत होगा। क्यों? क्योंकि I जो है R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसलिए हमको इसको अदर वर्ड्स में लिखना पड़ा, V is proportional to I, then we have a relation V is equal to I or where R is a constant known as resistance of the conductor। यहां पे ध्यान रखना है, फिर से एक बार मैं बोल दूं, Ohms carried out his experiment at a constant temperature, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। इसी रिलेशन से हमारे पास आता है I is equal to V by R। तो यहां हम देख सकते हैं that the current flowing through the circuit is inversely proportional to the resistance। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। The current flowing through the conductor is inversely to the resistance। I is inversely proportional to R। तो जैसे ही यहां पे R को हम डबल करेंगे I हाफ हो जाएगा, और R को यदि हाफ करेंगे I डबल हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये है ओम्स लॉ, ठीक है। रिलेशन देता है हमको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का, और ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास V is equal to IR, रेजिस्टेंस R is equal to V by I which is a constant, और उससे हम निकालते हैं उसका SI यूनिट जो कि वोल्ट पर एम्पियर है, जिसको हम लोग ओम कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इस खास सिंबल के द्वारा। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज ओम, ठीक है बच्चों। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस के आधार पे क्या कर सकते हैं उसको थोड़ा देखें। So children, resistance is theoretically defined as the tendency of a conductor to resist the flow of charges is called
resistance. So every conductor has a tendency which opposes the flow of current, the flow of charges, or you can say it resists the flow of charges. Some conductor has high resistance whereas other has low resistance. The conductor having the low resistance is a good conductor of electricity, whereas the conductors having the high resistance is a bad conductor of electricity. So it is just a tendency which opposes the flow of charge through the conductor. Now, resistance, every electrical appliance has more or less resistance. हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस थोड़ा या ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. तो पता है चाहे वो कंडक्टिंग वायरिंग क्यों ना हो, इलेक्ट्रिक बल्ब हो, फैन हो, ठीक है, मोबाइल फोन है, इसके अलावा गीजर है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है सबका, इवन सेल है, सबका अपना एक खास रेजिस्टेंस होता है सबके पास. ठीक है, तो जो भी कुछ है सब में रेजिस्टेंस होगा. रेजिस्टेंस को हम सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं जस्ट लाइक दैट. रेजिस्टेंस हो गया. एक और रेजिस्टेंस होता है जिसको हम वैरी कर सकते हैं, चेंज किया जा सकता है, उसको हम लोग रियोस्टेट कहते हैं. इसका डायग्राम एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है. सर्किट डायग्राम में जब देखिए तो सिंबल्स के बारे में. तो रियोस्टेट क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है, राइट, which is used to alter the current flowing through the circuit without changing the potential difference. A variable resistance. Known as rheostat is used to alter the current flowing through the circuit without changing the potential difference. और इसका सिंबल होता है बच्चों इस तरह का. राइट, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको हम लोग रियोस्टेट कहते हैं. रियोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है करंट को चेंज करने के लिए. रेजिस्टेंस घटाते बढ़ाते हैं करंट बदल जाता है. अगर रेजिस्टेंस घटाएंगे करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट घट जाएगा, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अनचेंज्ड. तभी तो पंखा कभी तेज कभी कम हम कैसे कर लेते हैं, रेगुलेटर रेजिस्टेंस घटाता बढ़ाता है और करंट आपका फ्लक्चुएट करता है, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट. पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलता है लेकिन करंट बदल जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस बदल रहा है. किसकी वजह से? इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वजह से, जिसको हम लोग रियोस्टेट कहते हैं. और बच्चों हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस देखेंगे. रेजिस्टेंस को हम कंबाइन कैसे करते हैं, या यूं कह लीजिए कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम कंबाइन कैसे करेंगे, कॉम्बिनेशन कैसे प्रिपेयर करेंगे. तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंसेस को हम कंबाइन कैसे करते हैं. हाउ वी प्रिपेयर अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और यू कैन से रजिस्टर्स कॉम्बिनेशन resistances. So resistances are
combined in two ways. That is, in series and parallel combination. Resistances. So we combine the resistances in two ways. That is, one as series combination, another as parallel combination. In series combination, resistances are combined end to end. सपोज करते हैं इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव, सो प्लस माइनस टुगेदर. ध्यान में रखना है बच्चों, एंड टू एंड कनेक्शन है ये इन सीरीज. Combination resistances are combined end to end, just like that. It is a series combination. Now in parallel combination, same ends are combined together. Suppose there are two or more resistances like that, positive, negative, another, positive, negative, another one, again positive, negative. So same end, all positive are combined together, all negative ends are combined together. Such kind of combination is called parallel combination. So always remember the difference between the parallel and series combination. In parallel combination, resistances are combined in end to end manner, whereas in parallel combination, same ends are combined together. So in parallel combination, resistances are combined as same ends together. So we have two kind of combination of resistances, series and parallel. Now, when we combine n number of resistances in series, what will be the equivalent resistance, effective resistance, total resistance of the combination? And when we combine n resistances in parallel combination, what would be, right, the total resistance of the entire circuit? So we will derive the relation for the equivalent resistance for series combination and parallel combination. Equivalent or effective or net resistance for series combination. So children, we are going to calculate, or you can say derive a relation for the equivalent means total, the effective means total, net means total,
the total resistance as a result of combining n number of resistances in series combination. तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा ये हम अभी कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला डिराइव करेंगे इसके लिए. सपोज three resistances R1, R2 and R3 are combined in series as shown in the circuit diagram. So there are three resistances having the value R1, R2 and R3 combined in series across AB end of the circuit. It is connected to a source of current. Current I is flowing. Since there is no other way out for the current to flow, the same current is flowing through each resistances. These are the R1, R2 and R3. These three resistances are combined across the two ends, that is A and B. But we can see in the series combination, it is one of the way by which we can identify whether the combination of resistances is series or in parallel. If the same current is flowing through all the resistances, then the resistances are combined in series. It is a way to identify, right, the type of combination. यदि सारे रेजिस्टेंस से एक ही करंट पास कर रहा है, जिन जिन रेजिस्टेंस से सेम करंट पास कर रहा है बच्चों, वो सीरीज में कंबाइंड होते हैं. क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई और दूसरा रास्ता नहीं है जिससे करंट फ्लो कर सके. सो the same current is flowing through R1, R2 and R3, but the potential difference across each resistance is different. The potential difference across R1 is V1, the potential difference across R2 is V2, and the potential difference across R3 is V3, whereas the net potential difference across AB is V. तो बच्चे ये यही समझने वाली बात है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं. कह रहा है suppose three resistances R1, R2, R3 are combined in series as shown in the diagram across the end A and B, right? The current I is flowing through the circuit. Current I is flowing through the circuit and V1, V2 and V3 are the potential difference across R1, R2 and R3 respectively, whereas V is the net potential difference across AB. तो यहां पर R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फिर से एक बार जरा समझ लीजिए, इसको स्पष्ट रखना है. Since there is no way out for the current to flow, the same current is flowing through the each resistances. कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो सेम करंट फ्लो करेगा. R1 से भी I फ्लो कर रहा है, R2 से भी I और R3 से भी
ही फ्लो कर रहा है, बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंसेस इज डिफरेंट है, अलग अलग है। R1 के क्रॉस है V1, R2 के क्रॉस है V2, R3 के क्रॉस है V3। जबकि जो नेट पोटेंशियल है क्रॉस ए बी, जिस एंड के बीच में ये तीनों रेजिस्टेंसेस कंबाइंड है, वो है V। सो द नेट पोटेंशियल डिफरेंस, therefore the net potential difference across AB is equal to V1 plus V2 plus V3। ये जो नेट पोटेंशियल होगा वो इन तीनों के सम के बराबर होगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन बन जाता है, नेट पोटेंशियल V equals to V1 plus V2 plus V3। Take it as first equation. Let it be the equation first. Now, by Ohm's law, by Ohm's law, V is equal to IR. We are representing this V as the net potential across AB, I the net current flowing through the circuit, and R is as the net resistance for series combination. RS, net resistance, or you can say equivalent resistance for series combination. Similarly, V1 equals to IR1. So potential difference across R1, the same current is flowing. So we have a relation by Ohm's law, V is equal to IR. So V1 is equal to IR1, V2 equals to IR2, V3 equals to IR3. Putting all this value in equation first, we get, putting these value in equation first, we get, simply we put all this value. So instead of V, we replace it by RS, IRS, where RS is the equivalent resistance, effective resistance or net resistance for the whole combination, is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. Taking I as common, we have IRS is equal to R1 plus R2 plus R3. Cancelling I from both sides, we get RS is equal to R1 plus R2 plus R3. So in this way, we find the equivalent resistance for series combination of n resistances. RS is equal to R1 plus R2 plus R3 plus Rn. The total effective resistance for the series combination is equal to the numerical sum of individual resistances. तो इसे ध्यान दीजिए, जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का, उन सब के न्यूमेरिकल वैल्यू के जोड़ के बराबर होगा। तो बच्चे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का था, इसमें दो बात भली भांति ध्यान में रखना है। पहला, सेम करंट फ्लो कर रहा है सबसे। दूसरा, सबके अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग है, जो कि सबका सम जो है V1, V2, V3 का, वो नेट पोटेंशियल के बराबर है। फिर ओम्स लॉ का इस्तेमाल करना है, वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना, इवैल्यूएट कर देना। इट्स वेरी सिंपल। Now we are going to derive the effective resistance for parallel combination of resistances. Equivalent resistance for parallel combination of resistances. In the similar way, we consider that three resistances, R1, R2 and R3 are combined in parallel.
across the two end A and B of a circuit. Since these three resistances R1, R2 and R3 are combined across the same end, so the potential difference across the end AB is V. It means the potential difference across all three resistances combined in parallel is same. तीनों के क्रॉस जो potential difference है वो same होगा. Whereas the current flowing through the circuit I get distributed. यहाँ तीन रास्ते मिल रहे हैं करंट को, ध्यान रखिएगा. पैरेलल पहचानने का एक नियम है, ठीक है. एक प्रकार से आप पैरेलल में पहचान सकते हैं कि कॉम्बिनेशन पैरेलल है कि नहीं है अगर करंट बट रहा है, ठीक है. इफ द करंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां जैसे ही आई आया यहां तक आई पहुंचे, राइट, प्लस एंड माइनस टर्मिनल, यहां से बट गया, ये हो गया I1, ये हो गया I2 और यहां से फ्लो कर रहा है I3. फिर ये वापस बाहर की ओर निकलेगा, कंबाइन कर जाएगा, यहां से वापस I नेट करंट निकल रहा है, ठीक है. सो द नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, आप ये सब लिख लीजिएगा. आप R1, R2, R3 आर कंबाइंड इन पैरेलल एज शोन इन द डायग्राम. इसको डिफाइन कर दीजिएगा डिराइव करते समय. सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो चीजों का, ध्यान रखना है यहाँ पे. स्पष्ट रूप से three resistances R1, R2, R3 are combined across the same end A and B, so the potential difference across them is same. इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में क्या रहेगा, सेम. क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों सेम एंड के क्रॉस कंबाइंड है. वेयरएज करंट जो पास करेगा इन तीनों से, यहां से आई फ्लो कर रहा है, जैसे यहां पहुंचेगा इस जगह पे द करंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, चैनलाइज हो जाएगा. तीन रास्ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा. यही नेट करंट बढ़ जाएगा, बढ़ करके तीनों से फ्लो करेगा, ठीक है. तो करंट यहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वहां पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, यहाँ करंट अलग अलग है. सो द नेट करंट is equal to I1 plus I2 plus I3. Net current is I, which is equal to I1 plus I2 plus I3. Let it be the first equation, right? Again by Ohm's law. Again by Ohm's law, we have I is equal to V upon Rp. It is the net effective resistance, right? The total resistance produced because of this combination, that is Rp, resistance for parallel combination. So I is equal to net current, net potential difference and net resistance. So I is equal to V upon Rp. Similarly, I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2 and I3 is equal to V upon R3. Now, putting all this value in this equation, putting these value in equation first, we get I को रिप्लेस कर देना है V बाई RP से, I1 को V बाई R1 से, I2 V बाई R2 से, इसमें रिप्लेस करके इवैल्यूएट कर देंगे. सो V अपॉन RP इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 implies V upon RP is equal to, taking V common, LHS में से V कॉमन निकालें, सो V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, कैंसलिंग V फ्रॉम बोथ साइड,
we get 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So the reciprocal, you can define it as the reciprocal of the equivalent resistance for parallel combination is equal to the sum of reciprocals of individual resistances. जो रेसिप्रोकल होगा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो इक्वल होगा रेसिप्रोकल के सम के बराबर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के. ठीक है, तो इस तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं. अगर n रेजिस्टेंसेस कंबाइंड है, फॉर n रेजिस्टेंसेस 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by Rn. तो बच्चों दोनों रिलेशन ध्यान में रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए. अब थोड़ा सा हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 2 या 3 रहेंगे तो उसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं, उसको देख करके आज का क्लास कंक्लूड करेंगे. तो बच्चों यदि 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइंड है तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे. हमारे पास 2 है. फॉर पैरेलल combination of 2 resistances, 2 रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा. सो हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला वी हैव 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Taking R1 R2, LCM of R1 and R2, we get R1 into R2 and it is R1 plus R2. By inverting them or applying inverted, we get Rp is equal to R1 into R2 upon R1 plus R2. सिंपल है, 2 का है सीधे इस तरह से ऊपर मल्टीप्लीकेशन में इसे जोड़ में रख दीजिए, यू विल गेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस. 3 के लिए अगर रहेगा ठीक ऐसे ही कर लेंगे. फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 रेजिस्टेंसेस, one by Rp we have in similar manner 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Taking the LCM of R1, R2, R3, we get R1, R2, R3. So it is R1, R2 plus R2, R3 plus R1, R3. By inverting it, we get Rp, the effective resistance of parallel combination of 3 resistances. ऊपर मल्टीप्लिकेशन में R1, R2, R3 और नीचे R1, R2 plus R2, R3 plus R1, R3. Putting the value of resistances, you can calculate the effective resistance for 3 combinations, 3 resistances. तो 2 का रहे तो सिंपली ऊपर मल्टीप्लिकेशन से नीचे एडिशन में, और 3 का रहे तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में और नीचे 2 का मल्टीप्लिकेशन एक साथ उनका सम रख करके आप निकाल दे सकते हैं. सो आई होप यू एंजॉयड द क्लास. In next session we will discuss about the resistivity, right? And at the end of the chapter we will thoroughly solve many numericals. So have a nice day. Good day.